Yeah, hi Tejas, how are you? Hello, am I audible, Tejas? Okay, so let's wait for Sagar for a few minutes. And I don't have idea about Mishra, whether he is joining today or not. There is some emergency, family emergency. I'll just call him. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। He'll call me back. No, no, no. So you were there on 9th. We discussed about these things. Okay. So we were discussing about what STLC, no? Almost zero defect life cycle. That's the knowledge. Okay. So you and Sagar are now on the same track. Now just Mishra, but he told me that share the recorded video, so he will learn from that. So not to worry about that. What I was thinking now, if we could have like four lectures now, in that four lectures, if we could have like for one lecture for Java, parallel with manual testing now, it could have been better, right? Because there is no connection of manual testing and Java. If you know the manual testing, you should have. Let's decide on that part. मतलब सबसे बात करेंगे. We will conclude that one. क्योंकि Java ना for Java we require practice. And it's better to start early. So tell me about few things like what is verification and validation, the main difference between that.
I'll share the screen just a minute. It's visible, right? So, what is the difference between a verification validation? Till they come now, we'll just have a revision. Just start. Means it's okay if you are wrong. No? No worries with that part. Mhm. Okay. Just a minute. I'll ask Sagar to. Yeah. So you were saying verification is the. Can you repeat this? Sorry, I missed some part. Okay. Okay. So verification is just checking the document part, right? Set activity that is sure. And validation is the actual testing of the application. So that is the main difference we should know about. Okay. So Sagar, where are you? Where are you? Where you have been? What is going on? All good? Okay. So Tejas, I'll just put a image of defect life cycle here. Can you able to? Will you able to explain to Sagar? Is it fine? Defect life cycle. Can you? Will you able to explain to Sagar how defect life cycle is there? Yeah. Try. If something is missing, I'll just help you. Don't worry on that part. Canvas. What the hell? This is the best image I found till now. Remaining cycle were not that much compatible. This was the best one. Is it visible? Yeah. Hmm. Do you know Sagar? Defect was what is a defect and a bug? Hmm. Huh? You don't know? In the first lecture only we took that thing, na? So you have not revised for your notes. Hmm? Here only we have discussed defect, right? The same notes, defect or bug, deviation from expected behavior. That's why I am saying you to be regular, okay? Because अगर जास्त gap पड़ला तो that may result you will not able to recall what is going on, and that is the reason I am taking the lectures in a continuous manner instead of weekend, because I don't want you guys to be blank 7 दिन के बाद क्या चल रहा है.
एंड मेरा भी ऐसा ना हो कि लिंक टूट जाए, सो टू गेट इन लिंक मैंने ऐसे लेक्चर रखे टाइम पे। सो ट्राई वी विल ट्राई टू, मतलब जल्दी खत्म करना इट्स नॉट द मेन थिंग। ओके, 15 दिन के बाद कुछ आया तो समझ में नहीं आता व्हाट हैड वेंट ना। सो दिस इज अ डिफेक्ट, राइट? सो डिफेक्ट इज अ एनी डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बिहेवियर इज कॉल्ड बग और डिफेक्ट। सो जब हम टेस्टिंग करते हैं, राइट, सो वी रेज अ डिफेक्ट। व्हाट इज दैट डिफेक्ट? कि अगर ये फंक्शनैलिटी है दैट इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड तो हम बग रेज करते हैं, राइट? सो दिस इज अ डिफेक्ट लाइफ साइकिल। नाउ Tejas will explain you how defect goes through different stages. Okay, Tejas, you can continue. Yeah, Tejas, continue. It's okay. If you go went wrong, na, I'll guide you. Don't worry. Hello, Tejas, are you there? Yeah, Tejas, you can start explaining. Yeah, go ahead. Go ahead. If it's not a valid defect, then mm-hmm. 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 Okay. सागर समझा कुछ? Mm-hmm. Okay. Good. Nicely explained. So I'll just tell you one more thing in this. With that, let's take some. Okay, we will be going towards the practical approach. So I'll just give me 1 minute. I'll just take the requirement with the help of Chat GPT. Based on that requirement, na, we will be writing the test cases. Okay. Also, I'll be using Chat GPT to get the requirement. Like Chat GPT will act as a business to us, who will give the requirement और उसके आगे का task हमें करना है. So give me a minute. Hmm. Give requirement for banking
application login. Okay, the screen is visible, right? So I'll explain you defect life cycle once again. Don't worry with this example. Both. Okay. So this is the requirement I have just taken from ChatGPT business requirement. Okay. So in this requirement we are going to, okay. So whenever a story comes to you, na, so it comes in this format. Let us say this format will become in the banking. Okay. So we will call it a requirement. What is the 3x now? 3x dot 3.1. Okay, this is our requirement for login functionality. You use login daily for daily purposes, right? For the different application. So when the requirement comes, it will not come in the like enter username password. It will be a detailed requirement with all the technical details as well as other details. Okay, so here it has been mentioned that user authentication and security. So multi-factor authentication. Multi-factor authentication, what is authentication? ऑथेंटिकेशन मतलब तुम्हें उसमें जाने के परमिशन दे रहा है, सपोर्ट फॉर ओटीपी, बायोमेट्रिक भी लॉगिन होना चाहिए एंड ऑथेंटिकेटर ऐप भी लॉगिन होना चाहिए. सो दिस माइट बी द functionality given by the bank. Okay, then username password, enforce strong password. It should have this uppercase number special character, right? Biometric login should work, support face id fingerprint authentication for mobile apps. Okay, one time password भी आना चाहिए, OTP for high risk transaction and auto logout after period of inactivity of 5 minutes. तो ये अपना रिक्वायरमेंट है, राइट? तो अभी हम इस पे फोकस कर देते हैं, बाकी हम जस्ट इग्नोर मारते हैं अभी के लिए. सो आई जस्ट कीप इट असाइड. ओके, ये अपना तुम्हें कि ने एक दिया है, क्या बोलते हैं, लेट्स से दिस इज द रिक्वायरमेंट गिवन बाय द बिजनेस टू अस. ओके, सो नाउ यू हैव टू राइट द टेस्ट केसेस. ओके, सो जस्ट फॉरगेट अबाउट द टेस्ट केसेस. ये पढ़ के तुम्हें कोई टेस्टिंग करने को बोले तो व्हाट विल यू टेस्ट? कैन यू टेल मी, तेजस? Sashi. Mhm. 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 Okay. Let's not get confused. Okay? Let's not confused. You are once you are explaining in nice way. Let's go in a systematic approach. Okay. First is that multi-factor authentication. Okay. So let's focus on this. Tell me the test cases for this. Miss a logic for this. How to test this? They just tell me one point, and then Sagar will tell me one point. OTP. Okay. Mm. Wait. There is some problem in the sequence. हाँ. First this should be followed. My bad. पहले यूजर नेम पासवर्ड आता है ना, देन ये बाकी चीजें आती है, राइट? सो वी विल फॉलो दिस अप्रोच. सॉरी, ये सीक्वेंस कैसे चार्ट जीपीटी ने दिया क्या पता. चलो ठीक है. हाँ, लेट्स से यूजर नेम एंड पासवर्ड. सो यूजर नेम में क्या चेक करोगे तुम? So let me tell you, it will be case like valid username, right? And valid password. First we will check whether user is login or not, right? यूजर लॉगिन होना चाहिए, बराबर. इसी कंडीशन में लॉगिन होना चाहिए, बाकी सभी कंडीशन में यूजर विल नॉट बी अलाउड टू लॉगिन.
एम आई करेक्ट? अभी मैंने अलाउड, लेट्स से अलाउड टू लॉग इन, टू लॉग इन, ओके। अभी बाकी सब कंडीशन हम देखते हैं। लेट्स से इनवैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड, तो रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, राइट? हाँ। सो अभी सब कंडीशन मैंने डाले अलग अलग, ठीक है। और एक कंडीशन कौन सी, इनवैलिड, इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड, और तीसरा इनवैलिड, वैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड। समझ रहा है ना सागर? हाँ, ठीक है। सो दिस आर द कंडीशन। ये क्या हो गया, तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन का हो गया। अभी हमें और क्या बताया गया है, enforce strong password policies, 8+ कैरेक्टर, अपर केस, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो अभी हमारा केस क्या हो गया, एक ये हो गया, एनफोर्स 8 कैरेक्टर, मतलब मिनिमम 8 होना चाहिए। सो हम क्या चेक करेंगे, वैलिडेट 7 डाले तो ये आना चाहिए, एरर आना चाहिए। ये निगेटिव टेस्टिंग हुआ अपना, पर पहले हम पॉजिटिव करते हैं। 8 वाला वैलिडेट 8 को प्रोसीड करने दे रहा है, राइट? वैलिडेट, ये आई थिंक यू मस्ट बी, मतलब ये कॉम्बिनेशन डालते होगे ना, अल्फा न्यूमरिक, कैपिटल, राइट, स्पेशल कैरेक्टर, राइट? ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग ना, तो हमें अभी की नहीं, ये रिक्वायरमेंट में हमने क्या किया, ये बड़ी रिक्वायरमेंट थी, उसका एक यूजर नेम और पासवर्ड वाला पार्ट लिया, और उसके हम एक केसेस लिख रहे हैं। दिस आर नथिंग बट टेस्ट केसेस। पहले हम सिनेरियो लिखते हैं, बाद में टेस्ट केस लिखते हैं। I'll tell you what is scenario, what is test case, ओके। सो अभी हमने क्या किया, वैलिडेट 8 वाला चेक किया, ओके। सो कैपिटल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर एंड ऑल। तो हमें क्या क्या चेक करना है, पहले पहले अल्फाबेट ले रहा है क्या। कभी कभी क्या होता है ना, वो क्या करते हैं, नंबर अलाउड नहीं करते, अल्फाबेट नहीं अलाउड करते हैं, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर शुड बी अलाउड, राइट? सो दिस शुड बी द योर टेस्ट केस, राइट? देन अगर तुमने खाली अल्फाबेटिकल डाला, लेट से तुमने डाला टीजी रोहित, ओके, ये डाला समझो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, एरर थ्रो करेगा, राइट? ओनली नंबर डाला, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? तो भी एरर थ्रो करेगा, क्यों करेगा? ओके, सो इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, राइट? अगर मैंने ये डाला समझो, अल्फा न्यूमरिक डाला, अल्फा न्यूमरिक, सो दिस आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कि क्या डाल रहे हैं हम, दिस आर योर पार्ट ऑफ टेस्ट केसेस, ओके। तुम जब टेस्ट केसेस लिखते हो ना, हाउ टू राइट द टेस्ट केसेस आई विल टेल यू, पर ये वर्डिंग डिफरेंट रहेगा, पर लास्ट में मीनिंग यही रहेगा कि तुम्हें ऐसा टेस्ट करना है, ओके। मैं क्लास चालू है, मिलाओ तो तुम्हें थोड़ा। हेलो, हेलो। सो अल्फा न्यूमरिक मध्ये, जस्ट अ मिनिट गाइस, हॅलो, हाँ क्लास चालू आहे, म्हणजे थोड्या वेळात लावतो मी। हाँ, 9 9:30। अल्फा न्यूमरिक में है ना, अल्फा न्यूमरिक डाला हमने, लेटेस्ट से रोहित 1 2 3 4, 8 वाली तो हमने कर दी फुलफिल कंडीशन, राइट? बट वो अल्फा कैपिटल वाली नहीं, कंडीशन फुलफिल की, वो वाली नहीं की, राइट? सो द करेक्ट पासवर्ड विल बी, लेट्स से EDEUROHIT @1234, so like this password will be correct password, right? सो जब ये हम सेट करते हैं ना, दैट इज द कंडीशन फॉर दैट, ओके। ये लॉगिन वाली कंडीशन नहीं है, लॉगिन में मतलब यू हैव ऑलरेडी सेट द पासवर्ड, राइट? दिस आर द कंडीशन रिलेटेड टू लॉगिन। बट ये पासवर्ड सेट करने की कंडीशन क्या रहेंगी, टू सेट द पासवर्ड, कंडीशंस पर टू सेट द पासवर्ड, कंडीशन टू सेट पासवर्ड, ओके। And these are the, just write the specific word,
test cases for login into application. Okay. So document. Okay. So this will be the condition to set password. So you have to write, include it in your test cases as well, that this should be the key thing. Okay, so let me tell you how to write the for example, we were discussing on this now you find out that for invalid username and pass valid password, that user is able to log in. So what you will do, you will do raise a bug that user with invalid username and valid password is able to log in into the application. So that is the bug you are going to raise, right? Okay, so when you raise a bug, so you have found out a defect or bug. Whenever you raise a bug na, that is in new condition, the bug will be in the new status. There is a status call, right? Status as a new, everything has been filter out or tested, मतलब कौन से भी चीज का है ना, status is the main thing in our Jira application और in our testing. ओके, उसका क्या स्टेटस है, क्लोज हुआ है क्या, ओपन हुआ है क्या, रीओपन हुआ है क्या, मतलब वी स्पीक दैट लैंग्वेज। ओके, सो जीरा कोई भी स्टोरी हो, उसका है ना स्टेटस क्या है, यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। सो स्टेटस ये वर्ड दिमाग में ध्यान में रख लो अभी। ओके, सो डेवलपर टीम विल चेक वेदर द डिफेक्ट इज वैलिड और नॉट। वैलिड मतलब क्या, मेरे मेरे करना था क्या, वेयर इज द वर्क। ओके, हाँ, डॉक्यूमेंट। हमें क्या चेक करना था, इनवैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड, रेस्ट्रिक्टेड लॉगिन, मतलब इसको रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए लॉगिन, राइट? पर हमने चेक क्या किया, वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड को रेस्ट्रिक्टेड लॉगिन। डोंट गो इन दिस कंडीशन, दीज आर बेसिक कंडीशन। पर जब हम बड़ी बड़ी स्टोरी लेते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं छोटे छोटे रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए एक्सपेक्टेड। तो वो केस में हमने कुछ तो गलत डाला, मतलब हमें एक्सपेक्टेड पता नहीं है, हमने कुछ तो गलत समझा और हमने बग रेज कर दिया। पर बाद में पता चला कि वैसा नहीं चाहिए था, एक्सपेक्टेड जो अभी दिख रहा है वही एक्सपेक्टेड है। तो वो कंडीशन में क्या करेगा डेवलपर, बग रिजेक्ट कर देगा, राइट? देन इफ द बग इज वैलिड बट स्कोप में नहीं है, स्कोप में नहीं है मतलब कि उन्होंने है ना, लेटेस्ट से उन्होंने आपको रिलीज दिया है कि इनवैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड का अभी तक नहीं आएगा आपका, ठीक है? अभी ये बिल्ड में नहीं आएगा, दिस इज लेटेस्ट से अ बिल्ड कॉल्ड 3.1 बिल्ड। ओके, दिस विल कम इन 3.2 बिल्ड करंटली, दिस विल नॉट, दिस विल बी इग्नोर्ड। ओके, ये यूएटी लेवल पे चल रहा है, प्रोडक्शन की बात नहीं चल रही, ये नेक्स्ट बिल्ड में आएगा। सो इन दैट केस दिस विल बी मार्क एज अ डेफर्ड। ओके, सो हाँ, जो हम डेफर्ड बोल रहे थे ना, क्या नवाज किधर गए, हाँ, दिस विल बी मार्केट डिफर्ड, मतलब ये नेक्स्ट रिलीज में आएगा। इज इट ऑलरेडी रेज, लेट अस से तेजस एंड सागर बोथ आर वर्किंग ऑन द सेम स्टोरी। एक एंड्रॉइड पे कर रहे हैं टेस्टिंग और एक आईएस पे कर रहे हैं, नहीं तो एक कौन से ब्राउजर पे कर रहे हैं, एक दूसरे ब्राउजर पे कर रहे हैं। सो इन दैट केस व्हाट हैपन, बोथ हैव रेज द सेम बग। सो इन दैट केस they will mark it as a duplicate and कीप इट असाइड, उसको नहीं देखेंगे। दोनों में से एक को डुप्लीकेट मार्क करेंगे, दोनों को भी नहीं करेंगे। गेटिंग पॉइंट? ओके, सो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो जाएगा आगे, ठीक है? डेवलपर स्टार्ट्स फिक्सिंग द कोड, अभी उसने एक्सेप्ट कर लिया प्रॉब्लम है, ठीक है, वो फिक्स कर देगा। फिर उसका स्टेटस चेंज हो गएगा इन प्रोग्रेस, बाद में वो कोड फिक्स करेगा और वो उसका स्टेटस चेंज कर देगा फिक्स और रेडी फॉर टेस्टिंग। ओके, रेडी फॉर टेस्टिंग मतलब अपने बकेट में आया। सो अपने बकेट में आया तो टेस्टर हैज टू टेस्ट दैट पार्ट, तो वो टेस्ट करेगा। अगर टेस्टिंग पास हो गया तो उसका स्टेटस होगा क्लोज। सो दिस इज द फाइनल, लेट अस से फाइनल पार्ट ऑफ द बग। अगर टेस्ट फेल हो गया, टेस्टिंग करने के बाद, तो उसको रीओपन करते हैं। तो अगर फिर से वो उसी इसमें जाएगा, डेवलपर स्टार्ट फिक्सिंग द कोड। ओके, अगेन वो पूरा साइकिल से आएगा टेस्टिंग के लिए। सो लाइक दैट, रीओपनिंग का काउंट जितना ज्यादा रहता है उतना क्वालिटी डेवलपमेंट का गंदा रहता है। ओके, ऐसा मतलब ये है। ओके, जितना डिफेक्ट प्रोडक्शन पे मिलता है उतना टेस्टिंग का क्वालिटी is not good. Okay, so like that it is a linkage, rejected का भी, the count of rejected should be minimum for a tester। अगर उसका count ज्यादा रह रहा है, it means your quality, you are not understanding the requirement। So you have to focus on that, your bugs should not get rejected। Okay, there are some times what happens now,
देर आर सम मिसकम्युनिकेशन, मतलब उनको पता नहीं रहता है कि दैट दैट यू हैव डिस्कस विद बिजनेस एंड दिस इज अ वैलिड बग. तो इन दैट केस यू आर दे हैव रिजेक्टेड द बग, राइट? So you have to come together with business and development team, okay, and ask the developer that this is a valid bug and you can reopen it, okay. So rejected का भी status reopen कर सकते हो तुम, because it's a valid bug, तुम्हें business ने discussion किया है. बट कभी कभी क्या होता है, मतलब द वे यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डेवलपर को भी नहीं समझा ना, दैट्स द केस. सो इन दैट केस वो भी रिजेक्ट कर सकते हैं. सो मिस्टेक्स कैन हैपन फ्रॉम बोथ साइड. दिस इज द कंप्लीट डिफेक्ट लाइफ साइकिल. मोस्टली हमेशा के लिए वो फ्रेशर्स को पूछते ही है, ओके. बाकी तुम इमेज देखोगे गूगल यूट्यूब पे कहाँ पे भी, यू विल सी दिस साइकिल, ओके. बट एक्चुअली ये होता है. सो दिस वाज द बेस्ट बग लाइफ साइकिल आई हैव फाउंड. ये दो सिंपल है जो रीओपन करके असाइन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये हमने जो इमेज निकाला है ना, दैट इज द बेस्ट वन, ओके. सो यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट फ्लो, राइट सागर? तेजस ने एक्सप्लेन किया, सो होप ही आपको भी क्लियर हो गया. तेजस अभी कुछ डाउट रहेगा तो इसमें, ठीक है. सो नाउ वी विल टेक नेक्स्ट फंक्शनलिटी फ्रॉम दिस. आई वांट यू राइट द टेल मी द केसेस नाउ, बिकॉज ये पूरे केसेस मैंने ही बताए बात बात करते करते. नाउ वी विल टेक दिस बायोमेट्रिक सपोर्ट, ओके. रिअल टाइम प्रोजेक्ट मध्ये समजलं नाही, परत बोल. कॅन यू टेल मी रिपीट? नाही, 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 नाही. रिअल टाईम प्रोजेक्टमध्ये मी टेस्ट केसेस तुला सांगतो कशा लिहायच्या. आपण एक टेस्ट केसेसची शीट पाठवतो, टेस्ट केसेस, ठीक आहे. तर ते मी तुला सांगतो, कारण तुला आधी टेस्ट केसेस लिहायचं कळालं ना, मग मी टेस्ट केसेसचा फॉर्मॅट सांगतो तुला. एक्सेल आहे माझ्याकडे, डोंट वरी. आणि तुझ्याकडून एका प्रोजेक्टसाठी मी लिहूनही घेतो, डोंट वरी, ठीक आहे. तर आता हाय बायोमेट्रिक सपोर्ट फेस आय डी आणि फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन फॉर मोबाईल ॲप्स. आता याच्या मला ना पॉझिटिव्ह केसेस सांगा, ओके. पॉझिटिव्ह म्हणजे सगळं टेस्ट झालं तर प्रॉपरली काय होईल, आणि निगेटिव्ह नंतर सांगूया. आधी पॉझिटिव्ह सांगा. आता टेस्ट केसेस लिहिताना आहे ना, मी तुम्हाला सांगतो मी कशा लिहितो. आधी आहे ना आपण सिनॅरिओ लिहित असतो, ओके. सो व्हॉट विल बी द सिनॅरिओ फॉर दिस, ओके. व्हॅलिडेट, मी लिहित आहे, समजून घ्या. व्हॅलिडेट युजर इज एबल टू लॉग इन विथ व्हॅलिड फेस आय डी. दिस इज द वन सिनॅरिओ, ओके. सेकंड सिनॅरिओ, व्हॅलिडेट user is able to log in with fingerprint. I'll just remove this part. Okay, Face ID, fingerprint. Okay. Then validate user restricted. Okay, to log in into application via uh, wrong face. Let's say. So these are the high level scenarios I have written. Okay. So test cases and test scenario में difference क्या रहता है? I'll tell you guys. Okay. So before going to that, give me a minute. हा टेल मी ना. तुम्ही सिनेरियो सांगत होते. अजून काही सिनेरियो होऊ शकतात? Okay, so this is the major difference between what is a test case and what is a test scenario. Okay, आता मी सांगतो तुम्हाला. A test scenario contains high level documentation which describes an end-to-end functionality to be tested. म्हणजे इथं मी काय लिहिलंय, व्हॅलिडेट युजर इज एबल टू लॉग इन विथ फेस आय डी, एवढंच लिहिलंय, बरोबर. म्हणजे एंड टू एंड काय चेक करायचंय, मी आय हॅव मेन्शन दॅट, ओके. Test case content define the test steps, data expected result for testing all features of an application. ते मी तुम्हाला दाखवणार. म्हणजे काय असतं, लेट अस से टेस्ट केसमध्ये काय लिहिणार तुम्ही, व्हेरीफाय युजर इज एबल टू लॉग इन विथ हिज फेस आय डी, ओके. तर स्टेपमध्ये काय येणार, पहिली स्टेप काय येणार, काय करणार तुम्ही, मोबाईल हातात घेतला, राईट. सो पहिली स्टेप काय येणार,
स्टेप वन. ओके, हां. ओपन लॉन्च द ॲप्लिकेशन, राइट? नो, ते बाहेरचं नाही लिहायचं आपल्याला मोबाईल रिलेटेड. ओके. ॲप्लिकेशनमध्ये गेला तू, ठीक आहे. तिथं आहे ना तुम्ही तिथं फेसचं एक हे लोगो आहे फेस आय डीसाठी, की तिथं क्लिक केल्यावर फेस आय डी व्हेरीफाय होणार, बरोबर? असं आहे समजा. तर यू विल क्लिक ऑन दॅट ऑप्शन. ओके. स्टेप टू विल बी दॅट. स्टेप थ्री, स्टेप स्टेप टू मध्ये तुमची टेस्ट केस कंप्लीट झाली. युजर इज एबल टू लॉग इन, युजर शुड एबल टू लॉग इन टू द ऍप्लिकेशन. समजतंय ना काय बोलतोय ते दोघांना पण? सागर. ओके. सो व्हॅलिडेट युजर इज एबल टू लॉग इन विथ फिंगरप्रिंट. तर स्टेपमध्ये काय असणार? सेम. तुम्ही साईड फिंगर असेल तुमच्या साईडवर क्लिक करा, सेंटरला असेल तर सेंटरवर क्लिक करा. ओके. लाईक दॅट. आपण ते डिटेलमध्ये जाणारच आहोत त्याच्यावर. तर आता आपण आधी टेस्ट केसेस आणि टेस्ट सिनेरिओ मधला डिफरन्स समजून घेऊया. अ टेस्ट सिनेरिओ कंटेन्स हाय लेवल डॉक्युमेंटेशन. ओके. एंड टू एंड फ्लोसाठी. आणि हे याच्यात असतील स्टेप्स, असतील स्टेप्स. अनदर थिंग, डेटा असू शकतो. ओके. फॉर दिस फंक्शनॅलिटी डेटा विल बी युअर फेस आय डी, फेस. ओके. इट विल नॉट बी मेन्शन एट फेस आय डी विल बी द डेटा. बट जेव्हा तुम्ही युजर नेम पासवर्डनं लॉग इन करसाल तर तेव्हा मी काय टाकसाल? दिस इज द युजर नेम, दिस इज द पासवर्ड, राईट? एक्सपेक्टेड रिझल्ट पण प्रत्येक स्टेपचा एक्सपेक्टेड रिझल्ट असेल. फॉर एक्झाम्पल, लेट से यू आर लॉग इन इन टू द ॲप्लिकेशन, राईट? फर्स्ट स्टेप काय असेल? लॉन्च द ॲप्लिकेशन. तर एक्सपेक्टेड रिझल्टमध्ये काय असेल? युजर इज एबल टू लॉन्च द ॲप्लिकेशन और ॲप्लिकेशन गेटिंग ओपन, राईट? सेकंड स्टेप, user enters the username, user enters the password. So like that user should be allowed to do that, right? Third, click on submit button or login button. Expected काय असेल? Okay. So login should be, user should be able to log in. Like that, these are the steps and this is the expected, right? नंतर it focuses on more what to test than how to test. काय टेस्ट करायचंय टेस्ट सिनेरिओ मध्ये फोकस असेल. आणि टेस्ट केसेस मध्ये हाऊ टू टेस्ट म्हणजे स्टेप्स लिहिलेले आहेत ना, राईट? ओके. जस्ट हाऊ टू एक्सप्लेस, एक मिनिट. मोर हाऊ टू टेस्ट दॅन हाऊ टू टेस्ट. अ कम्प्लीट एम्फासिस ऑन व्हॉट टू टेस्ट अँड हाऊ टू टेस्ट. म्हणजे काय टेस्ट करायचं आहे प्लस आणि हाऊ टू टेस्ट दोन्ही पण याच्यामध्ये इन्क्लूड असतं टेस्ट केसेसमध्ये. बिकॉज वी आर डुईंग डिटेल अनालिसिस, राईट? टेस्ट सिनेरियोज आर वन लाइनर. हे एकच लाईन लिहिली, बरोबर? Test cases have defined a step, prerequisites, expected result. Therefore, there is no ambiguity in the this process. Ambiguity म्हणजे काय? कन्फ्युजन राहणार नाही. एव्हरीथिंग इज क्लिअर, राईट? म्हणजे उद्या मी जर समजा तुला 5 टेस्ट केसेस लिहिल्या आणि एखादं ॲप्लिकेशन दिलंय आणि यू नो द टेस्टिंग, तर तू इझिली एबल टू फ्रॉम स्टेप्स ना यू विल एबल टू डू दॅट थिंग, राईट? समजतंय ना काय बोलतोय ते? Okay. Test scenarios are derived from the test artifacts like BRS, SRS. What is BRS? Business Requirement Document Specification. SRS is Software Required Specification. So test cases is mostly derived from test scenario. म्हणजे मी हे टेस्ट सिनेरिओ लिहिला तर याच्या अगेन्स्ट कोणत्या कोणत्या टेस्ट केसेस होतील. ओके. लेट अस से आय हॅव गिवन अ आय डी टू दिस टेस्ट सिनेरिओ, TSC 001. दिस इज द टेस्ट सिनेरिओ आय डी. ओके. एक युनिक आय डी दिला जातो आपण. ओके. नाव whenever I write the test cases against this na, so I have to mention the test case ID like this, 1 underscore TC001. Okay. If I am writing second case, then I have to write like this. समजतंय ना? ओके. सो दिस इज, हे फॉर्मॅट मी तुम्हाला सांगणारच आहे, डोंट वरी अबाउट दॅट. पण दिस इज द केस. ओके. सो या टेस्ट सिनेरिओसाठी किती केसेस झाले टेस्ट केसेस, दॅट इज द लॉजिक बिहाइंड दॅट. ओके. Then test scenarios, high level actions. Test cases are low level actions. Simple है. Comparatively less time and resources are required for creating and testing using scenario. जर तुम्हाला कधी कधी काय होतं माहिती आहे का, देर आर सम सिनेरिओ where you have been asked की just high level scenario test कर, don't do at the test cases level. तो what you will do, you will just check positive flow, एक एक फ्लो करणार, बरोबर? पण जेव्हा टेस्ट केसेस मध्ये येतात, ओके. फॉर एक्झाम्पल मी एक तुम्हाला सिनेरिओ सांगतो. ओके. काय सिनेरिओ असू शकतो? Okay, let's see, you upload a image from the gallery.
टू सम डॉक्युमेंट अपलोडेशन, राईट? तुम्ही काहीतरी इमेज अपलोड करता डॉक्युमेंटेशनच्या वेळेस, राईट? डॉक्युमेंट अपलोड करताना एखादा डॉक्युमेंट अपलोड करताय. सो टेस्ट सिनेरियो मध्ये काय मेन्शन आहे की यू आर अपलोडिंग द व्हॅलिडेट युजर शुड बी अलाउड टू अपलोड द इमेज फ्रॉम 0 to 5 MB, राईट? दॅट इज मेन्शन. तर तुम्ही काय करणार, घेणार इमेज एखादी 0 to 1 M, लेट से 1 MB to 5 MB. सो एखादी इमेज घेणार, सिलेक्ट करणार गॅलरीमधून, अपलोड करणार, ती अपलोड झाली, तुमची टेस्ट सिनेरिओ संपला. एम आय राईट? बरोबर. बट जेव्हा तुम्ही टेस्ट केसेसमध्ये जासाल ना, तर तुम्हाला हे पण चेक करायला लागतं की तिथं इमेजेस अपलोड होते का, दुसरंच काहीतरी भलतं अपलोड होऊ नये, राईट? एखादा MP4 व्हिडिओ अपलोड होऊ नये. सो दॅट इज द दॅट इज द बेसिक लेवल, लो लेवल दॅट वी हॅव टू गो. ओके, टेस्ट केसेस आर लो लेवल ऍक्शन्स, म्हणजे ग्राउंड लेवलचे ऍक्शन्स आहेत. ओके. सो कम्पॅरेटिव्हली लेस टाइम, म्हणजे त्यामध्ये लेस टाइम लागेल आणि इकडे ऑफकोर्स जास्त टाइम लागेल, बिकॉज यू हॅव टू डू स्टेप वाईज टेस्टिंग. ओके. टेस्ट सिनारिओ, आता हा सिनारिओ आहे, चेक द लॉग इन फंक्शनॅलिटी. जर तुमचा चेक द लॉग इन फंक्शनॅलिटीच्या टेस्ट केसेस बघितल्या, चेक द लॉग इन वुड बी चेक द सिस्टीम बिअर वेन व्हॅलिड ईमेल आयडी पासवर्ड एंटर्ड. हा मी आपण सगळ्या बघितल्या, बरोबर? इनव्हॅलिड ईमेल आयडी. Check the system beer when the email ID and password are left blank and sign is enter. बरोबर? Forgot password is working expected. So these are different login functionality साठी एवढ्या टेस्ट केसेस आहेत. अजून पण होऊ शकतील. ओके? माइट बी चान्सेस. सो होप तुम्हाला टेस्ट केसेस आणि टेस्ट सिनेरिओ मधला डिफरन्स कळाला, राईट? So that is the main difference between test case and test scenario. I'll just give me a minute. I'll just open and test case template. सो आपलं टेस्ट केसेस रिलेटेड सगळं होऊन जाईल आणि मी तुम्हाला आजपासून म्हणजे प्रोजेक्ट रिलेटेड टास्क देईल. एस आय टी. अजून आपलं टेस्टिंग रिलेटेड कन्सेप्ट खूप बाकी आहे, तरी पण मी पॅरलली देतोय सो दॅट यू विल एबल टू अंडरस्टँड. टेस्ट केस टेम्पलेट. नोट्स आहेत माझ्याकडे, देतो मी आज नोट्स. आज पाठवून देतो तुम्हाला नोट्स, डोंट वरी. ओके. बेटा, I'll share again. स्क्रीन दिसते का माझी? हा. हा टेस्ट केस फॉर्मॅट दिसतोय. Okay, so this is the actual test case format that is used, okay, in the actual organization. Okay, so कसं असतं ना, for every test scenario, okay, there is another test scenario sheet. I'll just create it just now, give me a minute. So let's see, okay, so serial number, then you have test scenario, module name. बाकीचे जे गोष्टी आहेत ना, दॅट्स द मेजर वर्क ऑफ अ टेस्टर इज टू राईट द टेस्ट सिनेरिओ प्रॉपरली फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, राईट द टेस्ट केसेस फ्रॉम द टेस्ट सिनेरिओ आणि एक्झिक्यूट. बाकीचं सगळं जे आहे ना, अदर थिंग्स, दे आर सेकंडरी थिंग्स. ओके. द मेन थिंग अ टेस्टर हॅज टू डू. ओके. तुमचं नॉलेज वगैरे, यू नो दॅट यू आर वर्क ऑलरेडी, बोथ आर वर्किंग. ओके. व्हॉट यू नो अँड व्हॉट यू आर वर्किंग माइट बी डिफरंट. ओके. पण टेस्टिंग मध्ये कसं आहे ना, माहिती आहे का, these three things you have to do important, and बाकीचं मग they are add-ons. Okay. So module name, then sub module, then we have mm, screen दिसते ना तुम्हाला, sub module, scenario ID, let's say scenario ID, then we have scenario description, then we have expected result. Okay. And there is one thing more here, scenario ID test cases. Okay, test cases. Okay, expected result.
Then we have remarks. Let us give a remark column. Okay. Okay. Ignore once ID once description change. Okay. So these are the things, right? So when you will have a login functionality, ना हमने अभी जो लिखा है, we'll just copy paste from that only. Well, that is the thing, right? सो अपना क्या है, वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड। तो हम एक लॉगिन फंक्शनैलिटी का लिखते हैं केसेस, ठीक है। तो ये मोस्टली कभी कभी इन्हें, मतलब एज अ फ्रेशर, यू आर बोथ आर फ्रेशर, ओके। सो एज अ फ्रेशर यू विल बी आस्क्ड सच क्वेश्चन कि लॉगिन फंक्शनैलिटी के लिए कॉम्प्लेक्स केसेस बनाओ। सिंपल केसेस तो कोई भी बताएगा, राइट। सो टेल मी कॉम्प्लेक्स केसेस, व्हाट आर द केसेस। हम अभी सिनेरियो लिखते हैं। तो पहला सिनेरियो लेट अस से वैलिडेट यूजर should be able to log in, okay, with valid details. This is the scenario, right? Now the second scenario will be should be should user should not be user restricted to login. दिमाग के ऊपर से नहीं जा रहा है ना, समझ रहा है ना, सिंपल चीज है। हाँ, सिंपल आहे, तेवढं काही अवघड नाही आहे। जस्ट तीन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या। अंडरस्टँडिंग रिक्वायरमेंटमधून जेवढे टेस्ट सिनेरियो पॉसिबल आहे तेवढे लिहायचे। आणि सेकंड थिंग, ओके, टेस्ट केसेस प्रॉपर लिहायच्या आणि टेस्ट एक्झिक्युशन प्रॉपर करायचं। आणि बग तर रेज करतो, बाकी बग रेज करणारच आपण ते, कारण आपल्याला तीन गोष्टी इम्पॉर्टंट जमल्या ना, बाकी गोष्टी आपल्याला इझिली जमतात, ओके। लॉग इन विथ रिस्ट्रिक्टेड टू लॉग इन विथ इनव्हॅलिड डिटेल्स, ओके। सो आता जर तुम्ही बघितलं तर आपण ह्या केसेस लिहिल्या, बरोबर। तर याच्यासाठी की नाही, ही सब मॉड्यूल, समजा काहीतरी सब मॉड्यूल आहे, आता इग्नोर करूया सब मॉड्यूल काही बी आहे। तर मॉड्यूलचे नावं असतात, समजा लॉग इन मॉड्यूल आहे, ओके, हा सिनेरियो आहे, ठीक आहे। एक मिनिट, सिनेरियो डिस्क्रिप्शन, राईट, वेअर इज द डिस्क्रिप्शन हिअर, हा डिस्क्रिप्शन आहे, बरोबर। तर सिनेरियो आय डी म्हणजे लेटेस्ट से लॉग इनचा आहे, बरोबर। सो वी विल लाईक समथिंग लॉग इन, सो इनिशियल काही देशील, नंतर टेस्ट सिनेरियो 001, ओके। देर विल बी अ सेकंड सिनेरियो दिस, ओके, टेस्ट cases. Now you know that this will have only one case, right? Username and password जेव्हा करेक्ट असेल, then user will be able to log in. So there will be one test case. हे आपण हे टेस्ट केसेस लिहिल्यानंतर मॅप करतो, आधीच नाही करत, पण मी तुम्हाला जस्ट सांगतोय। आधी आपण टेस्ट केसेस लिहितो, देन वी विल मॅप दिस, ओके। नंतर काय करतो आपण, आता याच्या केसमध्ये आपल्याकडे किती सिनेरियो टेस्ट केसेस आहेत? तीन केसेस आहेत, बरोबर। फ्रॉम, आता हा सिनेरियो याच्यासाठी परत वन पासून चालू करणार आपण, राईट, बिकॉज इट्स अनदर सिनेरियो, बरोबर। गेटिंग माय पॉइंट, समजतंय ना? ओके, ऑल गुड, ऑल गुड। रिमार्क मध्ये इफ एनिथिंग टू बी टेस्टेड एक्स्ट्रा किंवा एखादं काहीतरी मेन्शन करायचं असेल तर मेन्शन करू शकतो आपण, समजतंय ना? सो दिस इज अ टेस्ट सिनेरियो. नाउ इन टेस्ट केस टेम्पलेट आय विल एक्सप्लेन यू द what is a test case template. So test case template will consist of a module name, login module, requirement ID. Let us say requirement ID in this case is our आपली जी आपण जे सिनेरियो आयडी म्हणतो ना, रिक्वायरमेंट आयडी इज आयडी, तुम्ही जे रिक्वायरमेंट घेतली ना, आपण आता आपण जे डिस्कस केली ना, रिक्वायरमेंट, वेअर इज शीट टू,
ही जी रिक्वायरमेंट आहे याची एक आयडी असतं बरोबर. Everything is tracked in Jira. Jira is the application where everything is getting tracked, right? तो याची एक काहीतरी रिक्वायरमेंट आयडी बनते बरोबर. कळतंय ना. सो ट्रॅक करायला इझी होईल. तर लेटेस्ट से याची एक आयडी बनली. तुमच्या प्रोजेक्टचं नाव आहे समजा EDE. ओके. EDE समथिंग किंवा बँकचं एखादा ABC बँक आहे. सो ABC बँकसाठी इंटरनल ABC प्रोजेक्ट नसतो, काहीतरी वेगळा असतो. सो लेट्स से सम दे हॅव गिवन सम ABC प्रोजेक्टचं नाव, सो वॉट एव्हर. सो याची काहीतरी एक आयडी असेल 200. Okay. So whenever you write the require test cases ना, you will mention all these things. म्हणजे काय माहिती आहे का, इन फ्युचर कोणी टेस्ट पॅक ओपन केला तो हे टेस्ट केसेस कशाच्या तुम्ही नाव तर देसाल याला. नो नो नीड टू वरी अबाउट दॅट. की याला जेव्हा नाव देसाल ना तेव्हा असं नाव देसाल की ABC 200 टेस्ट केसेस. ओके. दॅट इज द थिंग. बट when it is also required to mention here also, require id is this is a test scenario, and for this scenario these are the test cases. Okay. Then we do have priority and severity. Okay. I'll tell you what is the difference between priority and severity. So priority is the thing where the you will give the priority depends on the which cases are important and which are not important. Okay. Then there are test cases step like click on the application, then expected result application should get launched. Click on the click on something application, click on email ID text box, click on this and all. Okay, like that these things are mentioned. Okay. So this is the test case template. I'll be sharing you another test case template, okay, which will have more details, and you will be writing test cases in that, okay, which is more better than this. Okay, getting my point? I hope you understand the difference between what is a test case template, test case and test scenario, right? So to just share, I want to share. So the screen is visible, right? So we understand what is the major difference between test case and test scenario. So that was the main thing to be considered. Mm, And I'll give you a task to write the test cases mm, mm, for. म्हणजे तुम्ही डिसाईड करा व्हॉट प्रोजेक्ट यू विल लाईक, अ बँकिंग प्रोजेक्ट, अ ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, की कोणता प्रोजेक्ट तुम्हाला आवडेल करायला. सो व्हॉट इज युअर मतलब दोघांनी दोन घेतलं तरी चालेल. एकानं बँकिंग घ्या, एकानं ई कॉमर्स घ्या, म्हणजे दोघांना पण यू विल एबल टू शेअर द टेस्ट केसेस. तुम्हाला मी काय करणार, एकाला लिहायला लावणार, दुसऱ्याला रिव्ह्यू करायला लावणार. सो लाईक दॅट विल हॅपन. So this project will be throughout your let's say testing manual testing project cycle. So is it okay if we kind of banking घेतलं? हं. सॉरी, काय काय? ओके, ठीक आहे चालेल. वेट मी एक्सेल ओपन करतो. So this is the template that I'll be sharing with you. टेस्ट. ओके, हा टेम्पलेट पण विचारतात टेस्ट केस टेम्पलेट. ओके, की तुम्ही कोणता टेस्ट केस टेम्पलेट वापरायचे. ओके, दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ युअर
हे विचारतातच, कारण तुम्ही टेस्टिंग म्हणजे टेस्टिंग माहिती आहे म्हणजे तुम्हाला टेस्ट केस टेम्पलेट पण माहिती आहे, कारण तुम्ही यातच तुमचं सगळं भरत असता, राईट? टेस्ट सिनेरिओ आय डी, देन टेस्ट सिनेरिओ डिस्क्रिप्शन, then we have like test case id, then we have test data, text data, test case, prerequisite. सो व्हॉट इज अ प्री रिक्विसिट? प्री रिक्विसिट म्हणजे कधी कधी काय होतं ना, यू डोंट हॅव टू टेस्ट राईट ईच अँड एव्हरी स्टेप. जेव्हा समजा तुम्हाला मधली फंक्शनॅलिटी चेक करायची आहे, ओके, कुठेतरी मधली 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 म्हणजे लाईक 5 layers आर देअर. लॉग इन इज देअर, ऑथेंटिकेशन इज देअर. यू डोंट हॅव टू राईट एव्हरीथिंग, राईट? इन प्री रिक्विसिट यू विल राईट user is already logged in and it's on a dashboard. ओके, समजतंय ना? सो तुमच्या ते बाकीच्या केसेस स्किप झाल्या बिकॉज यू हॅव कन्सिडर्ड दॅट युजर इज ऑलरेडी लॉग इन. सो इट विल जस्ट मॅनेज दोज केसेस विच आर ऑलरेडी वर्किंग अँड नॉट अ पार्ट ऑफ युअर टेस्टिंग. मतलब एक्स्ट्रा काही करायची गरज नाही ना. बट इफ यू कन्सिडर ऑटोमेशन टेस्टिंग, that need to be get considered. Okay, then prerequisite is there, then test data is there, then we have test case description. Okay, we have steps, expected result. There are some organization which follow expected result and actual result like that. But I'm sharing this. What is the actual template? Expected result. Then we will have like a module name, sub module. Okay. Then requirement ID. Then we'll have test case designer, designed by. So code use that designed by. Then we'll have reviewed by. Okay. What else? Now you can add automate a lot of things. Is automable? The automation होऊ शकते का टेस्ट केसचा? So these are depend on the organization. They will add. The first important things are this much. Okay, till expected result. This is a part of every test case template. Remaining things are mandate, not matlab that much mandatory. Okay. Where is this now? Okay. Now we will take a requirement as you were saying ना, हमने already take we have discussed it, but हम एक बार फिर से करेंगे. Give me anything, मतलब किसके लिए करना है? Is it okay if we do for a banking application? Okay. Okay, scenario sheet separate नहीं बनाता हूँ. What I'll do ना, I'll write a scenario here only that validate user is allowed to transfer money up to the up to the daily limit set by user. Okay, सो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो नहीं रहता है, फिर भी हम दो तीन सिनेरियो को एक ही में लिखेंगे फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो अभी अपने को एक लेटेस्ट अंडरस्टैंड. आपको लिमिट पता है ना, लिमिट थिंग यू नो राइट, ट्रांजैक्शन लिमिट रहती है, right? So what for, let us say our application, our ABC bank application, the limit set by bank is, let's say, 10 lakh. Okay, so 10 lakh के ऊपर you are not allowed to do. This is a daily limit, right? Getting my point? Sagar, समझते? Yes, sir. समझते ना? Okay, so this is the daily limit set by the set by the bank.
Okay, so you are been allowed to, you have to test this limit. Now, what are the different mode of transfers you are aware about? One is IMPS is there. Okay, this is related to banking, right? NEFT is there. RTGS is there. Aware, no? You are aware, right? These are the common. Okay, so these are the common mostly used. Okay, then UPI is not part of this limit because UPI has a separate limit of 1 lakh, which has been just converted to 2 lakh. Okay, so now, so you have to do the test cases, write the test cases. So I'll tell you, this is, let us say requirement is given as uh, MDS, let's say 2041 2404. Okay, this is the requirement. Okay, so what you will do now, you will mention a scenario ID. So this is the, let us say this is the requirement. Now what we'll do, based on this requirement, now we will write the scenario, because this is a complicated scenario that I am able to understand. So we'll write the scenario. So we'll write validate user is allowed to set limit below 10 lakh. Okay, so this is, here 10 lakh is the maximum limit. Are you getting my point? मतलब अपने पास क्या होगा, एक 0 to 10 lakh, इसके ऊपर नहीं जाने देना यूजर को, राइट? यूजर शुड बी अलाउड, यूजर को है ना, मिनिमम 0 सेट करने आना चाहिए और मैक्सिमम 10 लाख तक आना चाहिए, बिकॉज बैंक की लिमिट क्या है, डेली लिमिट पर यूजर 10 लाख की है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। तो यूजर को है ना, हम एक स्लाइडर देंगे, नहीं तो यूजर को एंटर करने को देंगे कि भाई तू अमाउंट डाल, पर 10 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए तेरा अमाउंट। सो इन दैट केस यूजर विल बी अलाउड टू एंटर दिस फील्ड। गेटिंग माई पॉइंट? सो 10 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 10 लाख के नीचे ही। सो वैलिडेट यूजर इज अलाउड टू सेट लिमिट बिलो, बिलो, लेट्स से इंस्टेड ऑफ बिलो, up to, we'll use the proper word up to, right? This is the scenario first. Then second is validate user is restricted, or user is not allowed to enter value more than 10 lakh. Okay, this is the second scenario. Validate user is allowed to transfer money as per daily limit. Okay, validate user restricted or blocked to transfer more than daily limit. समझ रहे हैं ना? So from this positive, what is positive? This is positive. This is a positive thing, right? So this is called as positive scenario. This is negative scenario because where validated user is not allowed, right? So this is a negative scenario. This is again a positive scenario, and this is again a negative scenario, right? Yeah. So now these are the scenario. Let's give the scenario ID as this is a limit, right? So I'll mention this is a payment related module. So p lim underscore कुछ भी दे सकते हैं. Okay, so depending what you are understand, test scenario 001. Okay, now this is the test scenario 002. This is test scenario 003, and this is test scenario 004. So these are the scenario made. Now we will be writing the test cases for test scenario 1, and for remaining test scenario I'll be expecting test cases from you. मैं बता देता हूँ लॉजिक वगैरह, अगर नहीं आया तो मैं क्लास में भी बता दूंगा, दैट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, बट यू शुड एबल टू राइट ऑल्सो. ओके, बिकॉज ओके. सो नाउ फॉर दिस सिनेरियो, what is the test case ID? First test case ID should be TC001, right? Let us say test data. Let's say the username. I'll mention username 1234, and a password. Let's say abc@123. कुछ भी हो सकता है ना. So let's mention like that. I'll just wrap it. View wrap.
का पता नहीं है, मुझे एक्सेल का पता है, इस गूगल शीट में। जस्ट मिनट। Okay, so this is the password. Prerequisite: user with ABC bank application. लेट्स से अपन है ना स्किप कर दे सब, यूजर इज लॉग्ड इन इनटू एप्लीकेशन, ये यहाँ पे जाते हैं चलेगा डायरेक्टली इतना, क्योंकि हमने लॉगिन के केसेस किए हैं अभी, राइट। टेस्ट डेटा डबल हो गया क्या? वेट, आई जस्ट रिमूव इट। डिलीट 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 डिलीट, किधर गया डिलीट? Delete column number. Okay. Then this is a test description. So what is with the test description for test case one? Validate user is allowed to set limit up to 10 lakh. Now we will write the test case. First step. Now there is a thing called as boundary value analysis. What is a boundary value analysis? I'll tell you. Okay. So we have been given 0 and 10 lakh, right? So these are our boundaries, right? Okay, so at boundary, according to boundary value analysis, na, I should be able to do that. I should have to do the testing at the boundaries. So for zero, what is my boundary? It's like for boundary value analysis, for zero, I have minus one, right? Then zero is there, and then plus one is there, right? Getting my point? Then for 10 lakh, let's say 10 lakh is there. This is a 10 lakh, right? So my boundary are, हम कंसिडर कर रहे हैं कि यूजर को है ना, यूजर इज अलाउड टू, सो दीज आर माई बाउंड्रीज, समझ रहा है ना। जीरो एक बाउंड्री है, 10 लाख एक बाउंड्री है, पर उसके आजू बाजू के वैल्यू जब चेक करेंगे हम, तो माइनस वन इज टू द लेफ्ट साइड, मतलब ये निगेटिव पार्ट है जो कि हमें एक्सक्लूड करना है, राइट। मतलब ये हमारे अलाउड नहीं होना चाहिए, राइट। दिस इज इंक्लूडेड, समझ रहा है ना। एंड दिस इज द ऑल्सो इंक्लूडेड क्योंकि अपने रेंज में है। नाउ दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड क्योंकि हमारे रेंज में 9 लाख 99, व्हाट इज दैट, 9,99,999, एक जीरो ज़्यादा तो नहीं हुआ है ना, ये इंक्लूडेड है, राइट। एंड दिस इज एक्सक्लूडेड, राइट, क्योंकि ये अपने लिमिट के बाहर है। सो योर टेस्ट केसेस शुड बी, दिस इज अ निगेटिव टेस्टिंग, अभी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट केसेस लिखेंगे फॉर दिस फोर। ओके, जब भी लिमिट रिलेटेड कुछ आता है तो यू हैव टू यूज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन हम कल देखते हैं, अभी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस समझ लीजिए, ठीक है। सो व्हाट इज द टेस्ट डिस्क्रिप्शन? वेरीफाई, पहला अपने को जीरो पे सेट करना है। वेरीफाई यूजर is able to set daily limit as, अगर 0 रुपए सेट किया उसने तो मतलब वो क्या कर रहा है कि मेरे को ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं करना है आज के दिन के लिए। सेट डेली लिमिट, आज के दिन के लिए नहीं, फॉर द मतलब नेक्स्ट जब तक अपडेट नहीं करे वो। सेट डेली लिमिट आज ₹0। ओके, सो स्टेप्स में क्या आएगा, अभी समझ रहा है ना तेजस, आई होप तुझे यही चाहिए था, राइट। ओके, स्टेप में आएगा लॉगिन रिलेटेड हम भूल जाते हैं, यूजर इज ऑन डैशबोर्ड, राइट। सो यूजर क्लिक ऑन, स्टेप में क्या आएगा, क्लिक ऑन मनी ट्रांसफर। ओके, देन यूजर will be redirected to money transfer dashboard। ओके, सागर तेरे को समझ में आ रहा है ना, आई होप, ठीक है। अ, अभी क्या, मनी ट्रांसफर पे लेट से क्लिक, सेट लिमिट का बटन बाहर ही है ऑप्शन, क्लिक ऑन सेट लिमिट। ओके, सो यूजर विल redirect you to set limit पेज।
set limit page. Dashboard is another thing. Page is another thing. Huh? You should know the difference. So then abhi enter amount as zero. User should be allowed to enter. Okay. Click on submit. Okay. User will get success message as अभी जो फिग्मा में मतलब डिजाइन में दिया है अपने को वो डेली लिमिट हैज बीन सेट टू रुपीज जीरो ओके लेट्स से जीरो वर्ड में आएगा वट एवर जीरो एंड इज एप्लीकेबल immediately or tomorrow whatever depend on the bank immediately okay getting my point समझ रहे सो दीज आर द फंक्शनलिटी ये जब आप बैंक में जाओगे तो वो उसके आराम से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा पर यू शुड नो व्हाट टू टेस्ट हाउ टू टेस्ट एंड ऑल ओके सो दिस इज द एक्सपेक्टेड नाउ आई हैव रिटन वन टेस्ट केस ओके इसमें कुछ डाउट है क्या अभी मेरे को बोलो कोई डाउट है इसमें दोनों को भी प्री रिक्विसिट म्हणजे काय म्हणजे प्री सॉरी स्पेलिंग चुकीची सांगितली प्री रिक्विसिट इज नथिंग वेअर तुला आहे ना म्हणजे की नाही तू मेन्शन करतो की हे दिस इज एक्सपेक्टेड म्हणजे एखादं एन्व्हायरमेंट आहे बरोबर व्हॉट लेट मी टेल यू आता तू जेव्हा की नाही स्विमिंगला जातो लेटेस्ट से आज स्विमिंगला जातो सो व्हॉट आर द प्री रिक्विसिट यू विल टेक युअर किट द गॉगल ओके स्विम सूट घेशील दीज आर द प्री रिक्विसिट टू गो टू द स्विमिंग समजतंय ना नो नॉट एक्सपेक्टेड प्री रिक्विसिट म्हणजे तयारी आधीच म्हणजे मी ही टेस्ट करतोय ना तर माझी व्हॉट इज एक्सपेक्टेड पहिलं काय रेडी पाहिजे मला मी आय युजर इज लॉग्ड इन टू द ऍप्लिकेशन म्हणजे युजर ऑलरेडी लॉग इन आहे तर मी त्याच्या बाकीच्या केसेस लिहिल्या नाही कुठे लिहिल्या एंटर युजर नेम एंटर पासवर्ड मी कन्सिडर केलं युजर ऑलरेडी लॉग इन टू द ऍप्लिकेशन जस्ट गुगल इट सो दॅट यू अंडरस्टँड प्री रिक्विसिट okay something that is necessary for something is to happen or exist समझ ना किसी अन्य बात के घटित होने या अस्तित्व में रहने के लिए आवश्यकता आता आपल्याला काय करायचं आहे मनी ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे तर मनी ट्रान्सफर बाहेर तर दिसणार नाही ना ऑप्शन तुला मनी ट्रान्सफर डॅशबोर्ड असं समज हा म्हणजे मनी ट्रान्सफर डॅशबोर्ड ते बाहेर नाही दिसणार तुला लॉग इन करायला लागणार पण मी इथं ऑलरेडी लिहिलंय युजर इज लॉग इन टू द ऍप्लिकेशन त्यामुळं हे बाकीच्या केसेस उघडून गेल्या बरोबर आता काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये सागर तुला दोघांना पण कळाल बऱ्यापैकी सो एवढंच आहे टेस्ट केस डिझाईन मध्ये एवढंच आहे नॉट अ मेजर थिंग तुम्हाला एवढं कळालं म्हणजे तुम्हाला टेस्ट केस डिझाईन आलं आता फक्त याच्यात काय कॉम्प्लिकेशन होऊ शकतात आय टेल यू तुम्हाला प्रोडक्टचं नॉलेज नसेल तर तुम्हाला कधी कधी समजत नाही की बुवा काय अंडर्स रिक्वायरमेंट आहे तुम्हाला एबीसी माहीत नसेल ठीक आहे तर तुम्हाला ए टू झेड माहीत नसेल तर तुम्हाला बॅटची स्पेलिंग नाही लिहिता येणार राईट सो सो त्यासाठी की नाही तुम्ही इंटरनेटचा वापर करा बँकिंग ऍप्लिकेशन सर टेस्ट करा ओके सो दॅट यू शुड गेट टू नो दॅट तर प्रॉडक्टचं नॉलेज तुम्हाला डिटेलमध्ये जेव्हा तुम्ही त्यात उतराल तेव्हाच येईल पण ॲज ऑफ नाऊ आय एम सेईंग टेस्ट केस डिझाईन करताना दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड ओके आता याच्यात कॉम्प्लेक्सिटी वाढू शकते फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग सिम्पल हे होऊ शकते टेस्ट केस डिझाईन म्हणजे काय असतं माहिती आहे का कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट आहे तिला किती सिम्पल मध्ये लिहिता येईल टेस्ट केसेसमध्ये तेवढं सिम्पल आता आपण एवढा कॉम्प्लेक्स सिनेरिओ आपल्याला दिला होता तर आपण त्याला एवढी मोठी रिक्वायरमेंट दिली होती ठीक आहे लेट से व्हॅलिडेट काढून देतो मी इथं ही आपली युजर स्टोरी आहे लेट से युजर इज अलाउड टू
तर आपण याला कन्वर्ट केलं एवढ्या सिंपल सिनेरिओमध्ये, इझिली अंडरस्टँडिंग. परत आपण याला टेस्ट केसेसमध्ये कन्वर्ट, पहिला सिनेरिओ घेतला आणि त्याला बाउंड्री व्हॅल्यू अनालिसिसनं आपण एवढ्या केसेस केल्या. लिहिली केस मी तर एकच, ठीक आहे, झिरोवाली. तर तुम्ही जर पॉझिटिव्ह, आता ही कोणती केस आहे? इथं आपण एक अजून एक ऍड करूया. मॉड्यूल नेमच्या जागी आहे ना, मी काय करतो, मॉड्यूल नेम इकडे टाकतो आणि इथं आहे ना टेस्ट केस टाईप लिहितो. इथं पॉझिटिव्ह लिहितो. ठीक आहे. आपला सिनेरिओ पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे टेस्ट केस पण पॉझिटिव्ह आली. निगेटिव्ह पण होऊ शकते, डझंट मॅटर. सो ही आली. तर नेक्स्ट स्टेप काय येणार? आपल्याला बाउंड्रीला चेक करायचं आहे आधी, पॉझिटिव्ह वाला रुपी 1 येणार. तर एवढं बस. आता बाकी सगळ्या गोष्टी सेम आहे. मी काय करणार, कॉपी पेस्ट करणार आणि झिरोच्या जागी 1 रिप्लेस करणार. कळालं? परत हे बाकीच्या गोष्टी सेम येणार जशाला तशा. सो दिस इज व्हॉट टेस्ट टेस्ट केस डिझाइन आहे. मोस्ट ऑफ द एका सिनेरिओ रिलेटेड काय असतं माहिती आहे का? एका सिनेरिओमध्ये काय ना, जेवढ्या केसेस असतात ना, त्या रिपीट होतात. सो यू हॅव टू जस्ट पेस्ट. पण तुम्हाला काय चेंज करायला लागतं? त्याचा डेटा चेंज करायला लागतो. फॉर एक्झाम्पल समजा इंडियन रेसिडेंट युजर असेल, त्याला आपण फंक्शनॅलिटी चेक करतोय आणि सेम फंक्शनॅलिटी एनआरआयला असेल, तर तुला टेस्ट केस तर एनआरआयची वेगळी लिहायला लागणार. बरोबर? चेक तर दोघांना नाही करायचं आहे. आर यू गेटिंग माय पॉईंट? मग ते काय होणार, टेस्ट केसेसमध्ये आपल्याला सेपरेट लिहायला लागणार की युजर इज येणार आहे. मग इथं लिहिणार टेस्ट डेटामध्ये आपण आय आर युजर, इथं येणार आहे युजर, इंडियन रेसिडेंट युजर, येणार आहे युजर, बाहेरचा युजर आहे. समजतंय ना गोष्टी? ओके. सो दिस इज द 1 रुपी. नाव आय शेअर यू दिस एक्सेल. यू जस्ट हॅव टू अपडेट इट. मतलब आता काय करा, तुम्ही दोघं जण पण आहे ना, हेच अपडेट करा. इथं सगळे सिनेरिओ आहेत, 1 2 3 4. ओके. पहिले हे वाला सिनेरिओ 1 कम्प्लीट करा. नंतर सिनेरिओ 2 च्या टेस्ट केसेस लिहा, 3 च्या लिहा, 4 च्या लिहा. ओके. आज बऱ्यापैकी आपण प्रॅक्टिकल समजलं, जे की आपल्याला खूप नंतर दिवसानंतर समजायचं होतं. पण मला वाटलं की प्रोजेक्ट चालू राहील आपला पॅरली, सो दॅट तुम्हाला डिटेलमध्ये अंडरस्टँडिंग येईल आणि एखादा वेबसाईट पण टेस्ट करा येईल. ठीक आहे. टेस्ट केस टेम्पलेट, टेस्ट केस लिमिट, डेली लिमिट प्रोजेक्ट, डेली लिमिट रिक्वायरमेंट. ठीक आहे. सेव्ह केली. मी शेअर करतो तुम्हाला. कॉपी लिंक चॅटमध्ये करतो. वेर इज इट? चॅटमधून पेस्ट करून घ्या ना लगेच. आणि काय करा, डाउनलोड करा आणि तुमच्या दोघांच्या साईडला आहे ना, तुम्ही दोघं जण हे करा. म्हणजे झाली का ओपन बघा बरं. झाली ओपन? हॅलो हॅलो हॅलो, झाली का ओपन? हां. ओके. सो डाउनलोड करून ये, फाईलवर क्लिक करा. तिथं माहिती आहे ना तुम्हाला ऑप्शन, फाईल सेव्ह ॲज. इथं ऑप्शन आहे ना, कुठेतरी कुठे गेली ते? हां. इथं आहे ना फाईल, डाउनलोड ऑप्शन नाही का, डाउनलोड हे वाला, हे करा आणि डाउनलोड करा तुमच्या ह्याच्यात. ठीक आहे. आणि ती अपडेट करा. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मॅटमध्ये डाउनलोड करा. आणि मला नेक्स्ट टाइम याच्या टेस्ट केसेस ॲटलीस्ट 2 सिनेरिओचे तरी लिहून हे करा, शेअर करा. ठीक आहे. याच्यात अपडेट करू नका प्लीज. आय होप राईट नसतील तुम्हाला, पण तरी पण अपडेट याद नका करू. तुम्ही दोघं जण वेगवेगळे लिहा. आपल्याला दोघांचे पण व्हेरीफाय करायचे. ठीक आहे, रिव्ह्यू करायचे. ओके. थांबूया आज मग. सॉरी, काय येतं एरर, काय येतं तुला? ओके, थांब एक मिनिट, मला रिक्वेस्ट आली असेल, मी अपडेट. बापरे, किती हिट मारला रे?
व्ह्यूवर म्हणून टाकतोय. शेअर केलं. तुझं हिट कर ना तेजस. की तू नंतर करणार? चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. ए नाही, लिंकवर क्लिक कर डायरेक्ट. काही नाही, फक्त तुझं क्रोमला घेऊन जाईल ते. हां, ते तर अरे ब्लॅक बॉक्स वगैरे तर खूप डिटेलमध्ये राहिले आपले. डोंट वरी ऑन दॅट. आपले टेस्टिंगचे कन्सेप्ट अजून शिकायचे आहेत आपले. मी फक्त हे कसं आलं होतं फ्लोमध्ये आणि तुम्ही विचारलं. नाहीतर कारण